chanting. So Bhagava Arhan Samma Sambuddho Yena Bhagavata Dhammo Supatipanno Yassa Bhagavato Savaka Sangho Tamayang Bhagavanta Sadamang Sasangham Kare Yata Arhan Aropite Abhipu Jayama Sadhuno Bhante Bhagava Suchira Parinebhutopi Pachima Janatanukampa Ime Sakare Dugat Panakara Bhute Patiganatu Amhakam Diga Itaya Sukhaya Samma Sambuddho Bhagava Buddhang Bhagavantang Abhivademi Bhagavata Dhammo Dhammang Namassami Supatipanno Bhagavato Savaka Sangho Sanghang Namami Handmayam Buddhasta Bhagavato Ubbhavanam Karam Karomasi. Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa Handmayam Buddhan Satinayam Karomasi. Tamko Pana Bhagavantang Evang Kalyano Kiti Saddho Abhugato Iti Piso Bhagava Arhan Samma Sambuddho Vijjacharana Sampanno Sugato Lokavidu Anuttaro Purisudhamma Sarati Manussanang Buddho Bhagavati Handmayam Buddha Vigitim Karomasi. Saddhavarahanta Varata Diguna Bhito Suddha Vijnana Karuna Isamagatato Bodhesiyo Sujanatang Kamalang Vasuro Vandami Ham Tamar Sirsa Jinendam Buddhoyo Sabbhapaninam Taranam Kimamuttamam. Pathamanusatittanang Vandami Tam Sirenaham Buddhasasmidasoa Buddho Me Sami Kissaro Buddhasaham Niyademi Sariram Jivitam Chidam Vandantoham Charissa Buddhaseva Subodhitam Natti Me Saranang Anyak Buddho Me Saranang Vadam Etena Satchavajjena Vadheyam Sattu Sasani Buddham Vandamanenayam Punyam Pasutam Eda
Sabbepi antarayami mahesum tasya tejasa Kaena vajjava jitsa Uddego kammam pakatamaya Buddho patika nato achentam Kalantare sambaritam buddhe Handmayam dhammanusatinayam karomasi Kato Svakato bhagavata dhammo Sandetiko akaliko ehipasiko Opanaiko pacchatang veditabba vinyohiti Handmayam dhamma vigitim karomasi Svakato Katatadigunayogasena seyo Yo magpaka pariyatti vimokha vedo Dhammo kulok patana tadadhari dhari Vandami ham tamara Varadhammamitam Dhammo yo Sabba paninam saranam khemam uttamang Dutyanusatittanam vandami tam sirenaham Dhammasasmi dasoa Dhammo me sami kissaro Dhammasaham niyademi Sariram jivitam chedam Vandantoham charisami Dhammaseva sudhammatam Nati me saranang anya Dhammo me saranang varang Etena sajja vajjena Vaddeyam sattu sasane Dhammang me vandamanena Yam punyam pasutam vidha Sabbepi antarayami Mahesum tasya tejasa Kaena vajjana jitsa Ammego kammam pakatamaya Namo patika nato chentu Kalantare sambaritam Handmayam sanghanusatinayam karomasi Supatipanno Bhagavato Savaka Sangho Ujupatipanno Bhagavato Savaka Sangho Nyayapatipanno Bhagavato Savaka Sangho Samichi Patipanno Bhagavato Savaka Sangho Yadidang chattari purisa Atha Purisa Pugala Esu bhagavato savaka sangho Ahuneyo pahuneyo Dakkineyo anjali karaniyo Anuttarang punyaketa lokasati Handmayam Sangavigitim Karomase Sadhammajo Supatipatti gunadiyuto Yo attavido ariya puggala sangha setu Siladi dhamma pavara sayakaya citto Vandami ham Tamariya Ganam Susuddham Sango Yo Sabbapaninam saranam kemamuttamam Tutyanusatittanang vandamitam sirenaham Tangasasmi dasoa sango me sangasaham niyademi sariram jivitam chidam
vandantoham charisam sanghasu patipannatam natti me saranang anya sango me saranang varam etena sajjavajjena vaddeyam sattu sasane sangham me vandamanena yam punyam pasutam eda sabbepi antarayami mahe sum tasya tejasa kayena vacca sanghe sango patiganato chanta sanghe. Light है ना अब अनंत लखन सुत्ता का पाठ सुनेंगे. Yantang sate hiduke nanyayang anatta lakkanang attavada tasanyanang sammadewa vimochanang sambuddho tang pakase siddhita sacana yoginang Uttaring pativedaya bhavetum jnanamuttamang Yante sangditta dhammanang jnanenupaparikatang Sambhasavehi cittani vimucting suasesato Tatanyana-nusarena sasanang katumichatang sadhunang atasidatang tang sutang tang panamase. Iwang visutang ekang samayang bhagava Varanasiyam viharati sipatane megadaye tatrako bhagava panchavaggiye bhikkhu amante sirupam bhikkhave anatta rupam chahidam bhikkhave atta bhavissati rupam apadaya samvartate yalabeta charupe evam me rupam ahotu evam me rupam mahosi yasamajako bhikkhave rupam anatta tasama rupang apadaya samvatatina calapati rupe evam me rupang hotu evam me rupang mahositi vedana anatta vedana cahidam bhikkhave atta bhavisanahidam vedana apadaya samvadeya labeta ca vedanaya evam me vedana hotu evam me vedana mahositi yasamajako bhikkhave vedana anatta vedana apadaya samvatatina calapati
ติเวดนายะเอวังเมเวดนาโหตุเอวังเมเวดนามหาโหสิทิสัญญานานาสัญญาชหิตังภิกขเวอาตาอาภาเวสนะหิตังสัญญาอาปาทายสังวาเตยลาเปตจะสัญญายะเอวังเมสัญญาโหตุเอวังเมสัญญามหาโหสิทิยสมาจโกภิกขเวสัญญานาทัสสมาสัญญาอาดายสังวาตันตินาจลาปฏิสัญญายะเอวังเมสัญญาโหตุเอวังเมสัญญามหาโหสิทิสังขาราอนัตตาสังขาราชหิตังภิกขเวอาตาภเวสังสนะหิตังสังขาราอาปาทายสังวาเทยงลาเบตัจสังขาเรสุเอวังเมสังขาราหนตุเอวังเมสังขารามาเหสุนติยสมาจโกภิกขเวสังขารานาถาทัสสมาสังขาราอาปาทายสังวาทันตินาจลาปฏิสังขาเรสุเอวังเมสังขาราหนตุเอวังเมสังขารามาเหสุนติวิญญาณังอนัตตาวิญญาณังชหิตังภิกขเวอัตตาภเวสนะหิตังวิญญาณังอาปาทายสังวาเตยลาเปตจวิญญาเนเอวังเมวิญญาณังโหตุเอวังเมวิญญาณังมหาโหสิทิยสมาจโกภิกขเววิญญาณังอนัตตาตัสสมาวิญญาณังอาปาทายสังวาตตินาจลาปฏิวิญญาเนเอวังเมวิญญาณังโหตุเอวังเมวิญญาณังมหาโหสิทังคิงมัญญตภิกขเวรูปังนิจจังวานิจจังวาทิอนิจจังปันเตอังอนันนิจจังทุกขังวาทังสุขังวาทิทุกขังปันเตยังปนานิจจังทุกขังวิปริณามธัมมังกาลังทุกขังสมานุปัสสิตุงเอตังมะมะเอโสอะมะสมิเอโสอัตตาทาติโนเหตังปันเตทังคิงมัญญตภิกขเวเวดนานิจจาวาอนิจจาวาทิอนิจจาพันเตยังปนานิจจังทุกขังวาทังสุขังวาทิทุกขังพันเตยังปนานิจจังทุกขังวิปริณามธัมมังกาลังทุกขังสมานุปัสสิตุงเอตังมะมะเอโสอะมะสมิเอโสเมอาตาปิโนเหตังบันเต
ทังคิงมัญญตภิกขเวสัญญานิจจาวะอนิจจาวะติอนิจจาพันเตยัมปนานิจจังทุกขังวะทังสุขังวะติทุกขังวันเตยัมปนานิจจังทุกขังวิปาริณามธัมมังกาลังทุกขังสมานุปัสสิตุงเอตังมะมะเอโสนัมสมิเอโสเมอาตาติโนเหตังวันเตทังคิงมัญญตภิกขเวสังขารานิจจาวะอนิจจาวะติอนิจจาพันเตยัมปนานิจจังทุกขังวะทังสุขังวะติทุกขังพันเตยัมปนานิจจังทุกขังวิปาริณามธัมมังกาลังนึกังสมานุปัสสิตุงเอตังมะมะเอโสมัสมิเอโสเมอาตาติโนเอตังบันเตทังคิงมัญญตภิกขเววิญญาณังนิจจังวะอนิจจังวะติอนิจจังบันเตยัมปนานิจจังทุกขังวะทังสุขังวะติทุกขังบันเตยัมปนานิจจังทุกขังวิปาริณามธัมมังกาลังนุทังสมานุปัสสิตุงเอตังมะมะเอโสมัสมิเอโสเมอาตาติโนเอตังพันเตทัสมาธิหะภิกขเวยังคินจิรูปังอธิฐานากตปัจจุบันนังอาจาทังวาปะหิตาวะโอลาริกังวาสุขมังวาหินังวาปณิตังวายันตุเรสันติเกวาสาบังวิปังเอตังมะมะเอโสมัสมินาเมโสอาตาติเอวะเมตังยะถาพุทธังสัมมาปัญญายะตถาปัญญาคาชิเวดนาอธิฐานากตปัจจุบันนาอาจาตาวะปะหิตาวะโอลาริกาวะสุขมาวะอินาวะปณิตาวะยาดุเรสันติเกวะสัพพเวทนาเนตังมะมะเนโสมัสมินาเมโสอาตาติเอวะเมตังยะถาพุทธังสัมมาปัญญายะตถาปัญญาคาชิสัญญาอธิฐานากตปัจจุบันนาอาชาตาวะปะหิตาวะโอลาริกาวะสุขังวาวะหินาวะปณิตาวะยาตุเรสันติเกวะสัพพสัญญาเนตังมะมะเนโสมัสมินาเมโสอาตาติเอวะเมตังยะถาพุทธังสัมมาปัญญายะตถาปัญเยเกจิสังขาราอธิฐานากตปัจจุบันนาอาชาตาวะปะหิตาวะโอลาริกาวะสุขังวาวะหินาวะปณิตาวะเยตุเร
สันติเกวาสาเปสังขาราเนทังอมเนโสอมัสมินาเมโสอัตถาทิเอวเมทังยะถาพุทธัสสัมมาปัญญายะตถาปัญยังคินชิวิญญาณังอธิฐานะกตปัจจุปันนังอาจาทังวะปะหิตาวะโอลาริคังวะสุขังวังวะอีนังวะปะนิทังวะยันตุเรสันติเกวะสัพพังวิญญาณังเนตังมะมะเนโสอมัสมินาเมโสอัตถาทิเอวะเมตังยะถาพุทธัสสัมมาปัญญายะตถาหังเอวังภาสังภิกขเวสุตวาอริยสาวกรูปัสมิงปินิปินดติเวทนายปินิปินดติสัญญายปินิปินดติสังขาเรอปินิปินดติวิญญาณังอปินิปินดตินิปินดังวิรัจติวิรากะวิมุตติวิมุตตัสมิงวิมุตตมิติญาณังโหติกีนาจาติวุสิตาบรมจริยังกัตถังกรณียังนาปรังอิทาทายาติปัจจานาทิทิธัมมวุชปะคะวะอาตมนาปัญจวัคคียภิกขุภะคะวะโตวาสิตังอภินันตันติมัสสมิจจปนเวยากรณัสสมิปัญญมาเนปัญจวัคคียานิภิกขุนังอนุปาทายาสเวหิจิตานิวิมุตติสุติอนัตตลักขณสุตานิทิตัง Connected to Galaxy Note 10 Lite. So we'll be listening to the second part of the Desana Ajahn Chah on Unshake-able piece. I'll just make the setting first. Chashma don't understand. This box में चश्मा है. Box में box. चश्मे का box है ना.
I was merely the one knowing and watching. My mind again returned to its normal state of consciousness, and I didn't wonder or speculate about what was happening. As I meditated, the mind once again inclined inwards. This time, the entire cosmos shattered and disintegrated into minute particles. The earth, ground, mountains, fields and forests, the whole world, disintegrated into the space element. People had vanished. Everything had disappeared. On this third time, absolutely nothing remained. The mind, having inclined inwards, settled down there for as long as it wished to. I can't say I understand exactly how it remained there. It's difficult to describe what happened. There's nothing I can compare it to. No simile is apt. This time the mind remained inside far longer than it had previously, and only after some time did it come out of that state. When I say it came out, I don't mean to imply that I made it come out, or that I was controlling what was happening. The mind did it all by itself. I was merely an observer. Eventually it again returned to its normal state of consciousness. How can you put a name on what happened during these 3 times? Who knows? What term are you going to use to label it? The power of samadhi. Everything I've been relating to you concerns the mind following the way of nature. This was no theoretical description of the mind or of psychological states. There's no need for that. When there's faith or confidence, you get in there and you really do it. Not just playing around, you put your life on the line. And when your practice reaches the stage that I've been describing, afterwards, the whole world is turned upside down. Your understanding of reality is completely different. Your view is utterly transformed. If someone saw you at that moment, they might think that you were insane. If this experience happened to someone who didn't have a thorough grip on themselves, they might actually go crazy, because nothing is the same as it was before. The people of the world appear differently from how they used to, but you're the only one who sees this. Absolutely everything changes. Your thoughts are transmuted. Other people now think in one way, while you think in another. They speak about things in one way, while you speak in another. They're descending one path, while you're climbing another. You're no longer the same as other human beings. This way of experiencing things doesn't deteriorate. It persists and carries on. Give it a try. If it really is as I described, you won't have to go searching very far. Just look into your own heart. This heart is staunchly courageous, unshakably bold. This is the heart's power, its source of strength and energy. The heart has this potential strength. This is the power and force of samadhi. At this point, it's still just the power and purity that the mind derives from samadhi. This level of samadhi is samadhi at its ultimate. The mind has attained the summit of samadhi. It's not mere momentary concentration. If you were to switch to vipassana meditation at this point, the contemplation would be uninterrupted and insightful. Or you could take that focused energy and use it in other ways. From this point on, you could develop psychic powers, perform miraculous feats, or use it any way you wanted. Ascetics and hermits have used samadhi energy for making holy water, talismans, or casting spells. These things are all possible at this stage, and maybe of some benefit in their own way. But it's like the benefit of alcohol. You drink it, and then you get drunk. This level of samadhi is a rest stop. The Buddha stopped and rested here. It forms the foundation for contemplation and vipassana, however. It's not necessary to have such profound samadhi as this in order to observe the conditions around us. So keep on steadily contemplating the process of cause and effect. To do this, we focus the peace and clarity of our minds to analyze the sights, sounds, smells, tastes, physical sensations, thoughts, and mental states we experience. Examine moods and emotions, whether positive or negative, happy or unhappy. Examine everything. It's as though someone else has climbed up a mango tree and is shaking down the fruit while we wait underneath to gather them up. The ones which are rotten, we don't pick up. Just gather the good mangoes. It's not exhausting because we don't have to climb up the tree. We simply wait underneath to reap the fruit. Do you get the meaning of this simile? Everything experienced with a peaceful mind confers greater understanding. No longer do we create proliferating interpretations about what's experienced. Wealth, fame, blame, praise, happiness and unhappiness come of their own accord, and we're at peace.
We're wise. It's actually fun. It becomes fun to sift through and sort out these things. What other people call good, bad, evil, here, there, happiness, unhappiness, whatever. It all gets taken in for our own profit. Someone else has climbed up the mango tree and is shaking the branches to make the mangoes fall down to us. We simply enjoy ourselves, gathering the fruit without fear. What's there to be afraid of anyway? It's someone else who's shaking the mangoes down to us. Wealth, fame, praise, criticism, happiness, unhappiness, and all the rest are no more than mangoes falling down, and we examine them with a serene heart. Then we'll know which ones are good and which ones are rotten. Working in accord with nature. When we begin to wield the peace and serenity we've been developing in meditation to contemplate these things, wisdom arises. This is what I call wisdom. This is vipassana. It's not something fabricated and construed. If we're wise, vipassana will develop naturally. We don't have to label what's happening. If there's only a little clarity of insight, we call this little vipassana. When clear seeing increases a bit, we call that moderate vipassana. If knowing is fully in accordance with the truth, we call that ultimate vipassana. Personally, I prefer to use the word panya, wisdom, rather than vipassana. If we think we're going to sit down from time to time and practice vipassana meditation, quote unquote, we're going to have a very difficult time of it. Insight has to proceed from peace and tranquility. The entire process will happen naturally of its own accord. We can't force it. The Buddha taught that this process matures at its own rate. Having reached this level of practice, capabilities, spiritual aptitude, and the merit we've accumulated in the past. But we never stop putting effort into the practice. Whether the progress is swift or slow is out of our control. It's just like planting a tree. The tree knows how fast it should grow. If we want it to grow more quickly than it is, this is pure delusion. If we want it to grow more slowly, recognize this as a delusion as well. If we do the work, the results will be forthcoming, just like planting a tree. For example, say we wanted to plant a chili bush. Our responsibility is to dig a hole, plant the seedling, water it, fertilize it, and protect it from insects. This is our job, our end of the bargain. This is where faith then comes in. Whether the chili plant grows or not is up to it. It's not our business. We can't go tugging on the plant, trying to stretch it and make it grow faster. This is not how nature works. Our responsibility is to water and fertilize it. Practicing Dhamma is the same way. It puts our heart at ease. Practicing Dhamma in the same way puts our hearts at ease. If we realize enlightenment in this lifetime, that's fine. If we have to wait until our next life, no matter. We have faith and unfaltering conviction in the Dhamma. Whether we progress quickly or slowly is up to our entities and the merit we've accumulated so far. Practicing like this puts the heart at ease. It's like we're riding in a horse cart. We don't put the cart before the horse. Or it's like trying to plow a rice paddy and walking in front of our water buffalo rather than behind. What I'm saying here is that the mind is getting ahead of itself. It's impatient to get quick results. That's not the way to do it. Don't walk in front of your water buffalo. You have to walk behind the water buffalo. It's just like the chili plant we're nurturing. Give it water and fertilizer and it'll do the job. It'll do the job of absorbing the nutrients. When ants or termites come to infest it, we chase them away. Doing just as much is enough for the chili to grow beautifully on its own. Once it's grown beautifully, we don't try to force it to flower when we think it should flower. It's none of our business. It will just create useless suffering.
Allow it to bloom on its own. Once the flowers do bloom, don't demand that it immediately produce chili peppers. Don't rely on coercion. That really causes suffering. Once we figure this out, we understand what our responsibilities are and what they're not. Each has their specific duty to fulfill. The mind knows its role in the work to be done. If the mind doesn't understand its role, it'll try to force the chili plant to produce peppers on the very day we plant it. The mind will insist that it grow, flower, and produce peppers all in one day. This is nothing but the second noble truth. Craving causes suffering to arise. If we're aware of this truth and ponder it, we'll understand that trying to force results in our Dhamma practice is pure delusion. It's wrong. Understanding how it works, we let go and allow things to mature according to our innate capabilities, spiritual aptitude, and the merit that we've accumulated along the way. We keep doing our part. Don't worry that it might take a long time. Even if it takes 100 or 1,000 lifetimes to get enlightened, so what? However many lifetimes it takes, we just keep practicing with a heart at ease, comfortable with our pace. Our mind has entered the stream. There's nothing to fear. It will have gone beyond even the smallest evil action. The Buddha said that the mind of a Sotapanna, a stream enterer, someone who has attained the first stage of enlightenment, who has entered the stream of Dhamma that flows to enlightenment, these people will never again have to experience the grim lower realms of existence, never again fall into hell. How could they possibly fall into hell when their minds have abandoned evil? They've seen the danger in making bad karma. Even if you tried to force them to do or say something evil, they would be incapable of it. So there's no chance of ever descending into hell or the lower realm. Their minds are flowing with the current of Dhamma. Once you're in the stream, you know what your responsibilities are. You comprehend the work ahead. You understand how to practice Dhamma. You know when to strive hard and when to relax. You comprehend your body and mind. This physical and mental process, you comprehend your body and mind, this physical and mental process, and you renounce the things that should be renounced, continually abandoning without a shred of doubt. Changing our vision. In my life of practicing Dhamma, I didn't attempt to master a wide range of subjects, just one. I refined this heart. Say we look at a body. If we find that we're attracted to a body, then analyze it. Have a good look. Head hair, body hair, nails, teeth and skin. The Buddha taught us to thoroughly and repeatedly contemplate these parts of the body. Visualize them separately, pull them apart, peel off the skin and burn them up. This is how to do it. Stick with this meditation until it's firmly established and unwavering. See everyone the same. For example, when the monks and novices go into the village on alms round in the morning, whoever they see, whether it's another monk or a villager, they imagine him or her as a dead body, a walking corpse staggering along the road ahead of them. Remain focused on this perception. This is how to put forth effort. It leads to maturity and development. When you see a young woman you find attractive, imagine her as a walking corpse, her body putrid and reeking from decomposition. See everyone like that. And don't let them get too close. Don't allow the infatuation to persist in your heart. If you perceive others as putrid and reeking, I can assure you, the infatuation won't persist. Contemplate until you're sure about what you're seeing, until it's definite, until you're proficient. Whatever path you then wander down, you won't go astray. Put your whole heart into it. Whenever you see someone, it's no different from looking at a corpse. Whether male or female, look at that person as a dead body. And don't forget to see yourself as a dead body. Eventually, this is all that's left. Try to develop this way of seeing as thoroughly as you can. Train with it until it's increasingly becoming a part and parcel of your mind. I promise, it's great fun if you actually do it.
But if you're preoccupied with reading about it in books, you'll have a difficult time of it. You've got to do it, and do it with utmost sincerity. Do it until this meditation becomes a part of you. Make realization of truth your aim. If you're motivated by the desire to transcend suffering, then you'll be on the right path. These days, there are many people teaching vipassana and a wide range of meditation techniques. I'll say this, doing vipassana is not easy. You can't just jump straight into it. It won't work if it's not proceeding from a high standard of morality. Find out for yourself. Moral discipline and training precepts are necessary, because if our behavior, actions, and speech aren't impeccable, we'll never be able to stand on our own 2 feet. Meditation without virtue is like trying to skip over an essential section of a path. Similarly, occasionally you hear people say, you don't need to develop tranquility, skip over it and go straight into the insight meditation of vipassana. Sloppy people who like to cut corners say things like this. They say you don't have to bother with moral discipline. Upholding and refining your virtue is challenging, not just playing around. If we could skip over all the teachings on ethical behavior, we'd have it pretty easy, wouldn't we? Whenever we'd encounter a difficulty, we just avoid it by skipping over it. Of course, we'd all like to skip over the difficult bits. There was once a monk I met who told me he was a real meditator. He asked for permission to stay with me and inquired about the schedule and standard of monastic discipline. I explained to him that in this monastery we live according to the Vinaya, the Buddha's code of monastic discipline, and if he wanted to come and train with me, he'd have to renounce his money and private supplies of goods. He told me his practice was non-attachment to all conventions, quote unquote. I told him I didn't know what he was talking about. How about if I stay here, he asked, and keep all my money, but don't attach to it? Money's just a convention. I said, sure, no problem. If you can eat salt and not find it salty, then you can use money and not be attached to it. He was just speaking gibberish. Actually, he was just too lazy to follow the details of the Vinaya. I'm telling you, it's difficult. When you can eat salt and honestly assure me it's not salty, then I'll take you seriously. And if you tell me it's not salty, then I'll give you a whole sack of it. Just try it. Will it really not taste salty? Non-attachment to conventions isn't just a matter of clever speech. If you're going to talk like this, you can't stay with me. So he left. We have to try and maintain the practice of virtue. Monastics should train by experimenting with the ascetic practices, the dhutanga, while lay people practicing at home should keep the 5 precepts. Attempt to attain impeccability in everything said and done. We should cultivate goodness to the best of our ability and keep on gradually doing it. When starting to cultivate the serenity of samatha meditation, don't make the mistake of trying once or twice and then giving up because the mind is not peaceful. That's not the right way. You have to cultivate meditation over a long period of time. Why does it have to take so long? Think about it. How many years have we allowed our minds to wander astray? How many years have we not been doing samatha meditation? Whenever the mind has ordered us to follow it down a particular path, we've rushed after it. To calm that wandering mind, to bring it to a stop, to make it still, a couple of months of meditation won't be enough. Consider this. When we undertake to train the mind to be at peace with every situation, please understand that in the beginning, when a defiled emotion comes up, the mind won't be peaceful. It's going to be distracted and out of control. Why? Because there's craving. We don't want our mind to think. We don't want to experience any distracting moods or emotions, and not wanting is craving, the craving for non-existence. The more we crave not to experience certain things, the more we invite and usher them in. I don't want these things, so why do they keep coming to me? I wish it wasn't this way, so why is it this way? There we go. We crave for things to exist in a particular way because we don't understand our own mind. It can take an incredibly long time before we realize that playing around with these things is a mistake.
Finally, when we consider it clearly, we see, oh, these things come because I call them. Craving not to experience something, craving to be at peace, craving not to be distracted and agitated, it's all craving. It's all a red-hot chunk of iron. But never mind, just get on with the practice. Whenever we experience a mood or emotion, examine it in terms of its impermanence, unsatisfactoriness, and selfless qualities, and toss it into one of these three categories. Then reflect and investigate. These defiled emotions are almost always accompanied by excessive thinking. Wherever a mood leads, thinking straggles along behind it. Thinking and wisdom are two very different things. Thinking merely reacts to and follows our moods and thoughts, and they carry on with no end in sight. But if wisdom is operating, it will bring the mind to stillness. The mind stops and doesn't go anywhere. There's simply knowing and acknowledging what's being experienced. When this emotion comes, the mind's like this. When that mood comes, it's like that. We sustain the knowing. Eventually it occurs to us, hey, all this thinking, this aimless mental chatter, this worrying and judging, it's all insubstantial nonsense. It's all impermanent, unsatisfactory, and not me or mine. Toss it into one of these three all-encompassing categories and quell the uprising. You cut it off at its source. Later, when we again sit in meditation, it'll come up again. Keep a close watch on it. Spy on it. It's just like raising water buffaloes. You've got the farmer, some rice plants, and the water buffalo. Now, the water buffalo wants to eat those rice plants. Rice plants are what the water buffaloes like to eat, right? Your mind is a water buffalo. Defiled emotions are like the rice plants. The knowing is the farmer. Dhamma practice is like this, no different. Compare it for yourself. When tending a water buffalo, what do? You release it, allowing it to wander freely, but you keep a close eye on it. If it strays too close to the rice plants, you yell out. When the buffalo hears, it backs away. Don't be inattentive, oblivious to what the buffalo is doing. If you've got a stubborn water buffalo that won't heed your warning, take a stick and give it a stout whack on the backside. Then it won't dare go near the rice plants. Don't get caught taking a siesta. If you lie down and doze off, those rice plants will be history. Dhamma practice is the same. You watch over your mind. The knowing tends the mind. Those people who keep a close watch over their minds will be liberated from Mara's snare, quote unquote. And yet, this knowing mind is also the mind. So, who's the one observing the mind? Such ideas can make you extremely confused. The mind is one thing, the knowing another, and yet the knowing originates in this very same mind. What does it mean to know the mind? What's it like to encounter moods and emotions? What's it like to be without any defiled emotions whatsoever? That which knows what these things are is what is meant by the knowing, quote unquote. The knowing observantly follows the mind, and it's from this knowing that wisdom is born. The mind is that which thinks and gets entangled in emotions, one after another, precisely like our water buffalo. Whatever directions it strays in, maintain a watchful eye. How could it get away? If it starts to drift over towards the rice plants, yell out. If it won't listen, pick up a stick and stride over to it. Whack! This is how you should frustrate craving. Training the mind is no different. When the mind experiences an emotion and instantly grabs it, it's the job of the knowing to teach. Examine the mood to see if it's good or bad. Explain to the mind how cause and effect functions. And when it again grabs onto something that it thinks is adorable, the knowing has to again teach the mind, again explain cause and effect, until the mind is able to cast that thing aside. This leads to peace of mind. After finding out that whatever it grabs and grasps is inherently undesirable, the mind simply stops. It can't be bothered with those things anymore because it's come under a constant barrage of rebukes and reprimands. Thwart the craving of the mind with determination. Challenge it to its core until the teachings
penetrate to the heart. That's how you train the mind. Since the time when I withdrew to the forest to practice meditation, I've been practicing like this. When I train my disciples, I train them to practice like this, because I want them to see the truth, rather than just read what's in the scriptures. I want them to see if their hearts have been liberated from conceptual thinking. When liberation occurs, you know. And when liberation has not yet happened, then contemplate the process of how one thing causes and leads to another. Contemplate until you know and understand it through and through. Once it's been penetrated with insight, it'll fall away on its own. When something comes your way and gets stuck, investigate it. Don't give up until it's released its grip. Repeatedly investigate right here. Personally, this is how I approach the training, because the Buddha taught that you have to know for yourself. All sages know the truth for themselves. You've got to discover it in the depths of your own heart. Know yourself. If you're confident in what you know and trust yourself, you will feel relaxed, whether others criticize you or praise you. Whatever other people say, you're at ease. Why? Because you know yourself. If someone bolsters you with praise, but you know that you're not actually worthy of it, are you really going to believe them? Of course not. You just carry on with your Dhamma practice. When people who aren't confident in what they know get praised by others, they get sucked into believing it, and it warps their perception. Likewise, when someone criticizes you, take a look at it and examine yourself. No, what they say isn't true. They accuse me of being wrong, but actually, I'm not. Their accusation isn't valid. If that's the case, what would be the point of getting angry with them? Their words aren't true. If, however, we are at fault, just as they accuse, then their criticism is correct. If that's the case, what would be the point of getting angry with them? When you're able to think like this, life is truly untroubled and comfortable. Nothing that then happens is wrong. Then everything is Dhamma. That is how I practiced. Following the middle path. It's the shortest and most direct path. You can come and argue with me on points of Dhamma, but I won't join in. Rather than argue back, I just offer some reflections for you to consider. Please understand what the Buddha taught. Let go of everything. Let go with knowing and awareness. Without knowing and awareness, the letting go is no different from that of cows and water buffaloes. Without putting your heart into it, the letting go isn't correct. You let go because you understand conventional reality. This is non-attachment. The Buddha taught that in the beginning stages of Dhamma practice, you should work very hard, develop things thoroughly and attach a lot. Attach to the Buddha, attach to the Dhamma, attach to the Sangha, attach firmly and deeply. That's what the Buddha taught. Attach with sincerity and persistence and hold on tight. In my own search, I tried nearly every possible means of contemplation. I sacrificed my life for the Dhamma because I had faith in the reality of enlightenment and the path to get there. These things actually do exist, just like the Buddha said they did. But to realize them takes practice, right practice. It takes pushing yourself to the limit. It takes courage to train, to reflect, and to fundamentally change. It takes the courage to actually do what it takes. And how do you do it? Train the heart. The thoughts in our heads tell us to go in one direction, but the Buddha tells us to go in another. Why is it necessary to train? Because the heart is totally encrusted with and plastered over with defilements. That's what a heart is like that has not yet been transformed through the training. It's unreliable, so don't believe it. It's not yet virtuous. How can we trust a heart that lacks purity and clarity? Therefore, the Buddha warned us not to put our trust in a defiled heart. Initially, the heart is only the hired hand of defilement, but if they associate together for an extended period of time, the heart is distorted to become defilement itself. That's why the Buddha taught us not to trust our hearts. If we take a good look at our monastic training discipline, we'll see that the whole thing is about training the heart. And whenever we train the heart, we feel hot and bothered. As soon as we're hot and bothered, we start to complain. Boy,
This practice is incredibly difficult. It's impossible. But the Buddha didn't think like that. He considered that when the training was causing us heat and friction, that meant we were on the right track. We don't think that way. We think it's a sign that something's wrong. This misunderstanding is what makes the practice seem so arduous. In the beginning, we feel hot and bothered, so we think we're off track. Everyone wants to feel good, but they're less concerned about whether it's right or not. When we go against the grain of the defilements and challenge our cravings, of course we feel suffering. We get hot, upset and bothered and then quit. We think we're on the wrong path. The Buddha, however, would say that we're getting it right. We're confronting our defilements, and they are what is getting hot and bothered. But we think it's us who are hot and bothered. The Buddha taught that it's the defilements that get stirred up and upset. It's the same for everyone. That's why Dhamma practice is so demanding. People don't examine things clearly. Generally, they lose the path on either the side of self-indulgence or self-torment. They get stuck in these two extremes. On one hand, they like to indulge their heart's desires. Whatever they feel like doing, they just do it. They like to sit in comfort. They love to lie down and stretch out in comfort. Whatever they do, they seek to do it in comfort. This is what I mean by self-indulgence. Clinging to feeling good. With such indulgence, how could Dhamma practice possibly progress? If we can no longer indulge in comfort, sensuality, and feeling good, we become irritated. We get upset and angry and suffer because of it. This is falling off the path on the side of self-torment. This is not the path of a peaceful sage, not the way of someone who's still. The Buddha warned not to stray down these two sidetracks of self-indulgence and self-torment. When experiencing pleasure, just know that with awareness. When experiencing anger, ill will, and irritation, understand that you're not following in the footsteps of the Buddha. Those aren't the paths of people seeking peace, but the roads of common villagers. A monk at peace doesn't walk down those roads. He strides straight down the middle with self-indulgence on the left and self-torment on the right. This is correct Dhamma practice. If you're going to take up this monastic training, you have to walk this middle way, not getting worked up about either happiness or unhappiness. Set them down. But it feels like they're kicking us around. First they kick us from one side, ow! Then they kick us from the other, ow! We feel like the clapper in our wooden bell, knocked back and forth from side to side. The middle way is all about letting go of happiness and unhappiness, and the right practice is the practice in the middle. When the craving for happiness hits and we don't satisfy it, we feel the pain. Walking down the middle path of the Buddha is arduous and challenging. There are just these two extremes of good and bad. If we believe what they tell us, we have to follow their orders. If we become enraged at someone, we immediately go searching for a stick to attack them. We've no patient endurance. If we love someone and want to caress them from head to toe, am I right? These two sidetracks completely miss the middle. This is not what the Buddha recommended. His teaching was to gradually put these things down. His practice was a path leading out of existence, away from rebirth, a path free of becoming, birth, happiness, unhappiness, good and evil. Those people who crave existence are blind to what's in the middle. They fall off the path on the side of happiness and then completely pass over the middle on their way to the other side of dissatisfaction and irritation. They continually skip over the center. This sacred place is invisible to them as they rush back and forth. They don't stay in that place where there is no existence and no birth. They don't like it, so they don't stay. Either they go down out of their home and get bitten by a dog, or fly up to get pecked by a vulture. This is existence. Humanity is blind to that which is free from existence, with no rebirth. The human heart is blind to it, so it repeatedly passes it by and skips it over. The middle way walked by the Buddha, the path of correct Dhamma practice, transcends existence and rebirth. The mind that is beyond both the wholesome and the unwholesome is released.
This is the path of a peaceful sage. If we don't walk it, we'll never be a sage at peace. That peace will never have a chance to bloom. Why? Because of existence and rebirth. Because there's birth and death. The path of the Buddha is without birth and death. There's no high, no low. There's no happiness and no suffering. There's no good and no evil. This is the straight path. This is the path of peace and stillness. It's peacefully free of pleasure and pain, happiness and sorrow. This is how to practice Dhamma. Experiencing this, the mind can stop. It can stop asking questions. There's no longer any need to search for answers. There. That's why the Buddha said that the Dhamma is something that the wise know directly for themselves. No need to ask anybody. We understand clearly for ourselves, without a shred of doubt, that things are exactly as the Buddha said they were. शुरुआत जो समाधि के बारे में इससे पहले उन्होंने अपने अनुभव बताए थे जिसमें कि सारा शरीर पहले भंग की स्थिति में हुआ फिर सारा संसार ही भंग हो गया शून्य का अनुभव हुआ उसके बारे में उसके आगे वो बात करें तो शिव साहब अपनी समाधि के जो पुराने अभ्यास थे उसके जिसके आधार पे वो उन्होंने अनुभव किया शरीर का भंग होना और फिर संसार का भंग होना और शून्यता का अनुभव तो उसके बाद वो समाधि के बारे में बता रहे हैं कि जो भी मैंने अभी तक आपको बताया है वो मन के प्रकृति के हिसाब से चलने का नतीजा है कोई वो थ्योरेटिकल बात नहीं बताई और जब आप उस स्थिति में पहुंच जाते हैं जो उन्होंने पहले बताई तो आपका सारा वर्ल्ड व्यू बदल जाता है दृष्टि बदल जाती है और उस समय कोई आपको देखे तो हो सकता है वो समझेगी तो पागल है जो लोग हैं संसार के वो बिल्कुल भिन्न दिखने लगते हैं सब कुछ बदल जाता है विचार बदल जाते हैं लोग बाहर संसार में लोग एक तरह सोचते हैं आप दूसरी तरह सोचते हैं हाँ जो से आप अनुभव कर रहे हैं वो वैसे अनुभव हो रहा है लेकिन उसका अर्थ जो है उसका तात्पर्य है वो बदल जाता है मन बहुत स्ट्रांग हो जाता है और उसको कॉन्फिडेंस हो जाता है कि हाँ जो मैंने किया है वो कर रहा हूँ ठीक है ये समाधि की पराकाष्ठा है और इस स्थिति से इस समाधि के लेवल से विपश्यना साधना शुरू की जाए तो कंटेम्पलेशन जो हमारा जो इन्वेस्टिगेशन है वो बहुत निरंतर होगा और शीघ्रता से ही उसका फल मिलना शुरू हो जाएगा लेकिन कई लोग इस परिस्थिति से बढ़ के दूसरी डायरेक्शन में चले जाते हैं साइकिक पावर्स और दूसरे काम करने लगते हैं कुछ हो दूसरों पे असर करना तावीज चंडंग बनाना इस तरह के काम करने लगते हैं ये सब चीज़ें ऐसी समाधि की अवस्था में पॉसिबल है लेकिन ये ऐसा करना उसी तरह से है जैसे कि शराब पीना एक बार आपने पी लिया तो फिर आप नशे में गए और फिर शराबी हो गए हाँ विपश्यना करने के लिए इतनी गहन समाधि की आवश्यकता नहीं है उतना ही काफी है कि हम निरंतरता से कॉज इफेक्ट को समझ सकें जो भी हो रहा है हमारी इंद्रियों के ऊपर उसको जान सकें ठीक से अपने मूड्स को इमोशंस को सबको एग्जामिन कर सकें
तो जब मन शांत हो जाता है तो जो भी अनुभव होता है उससे हमारी अंडरस्टैंडिंग बढ़ती जाती है, हमें क्योंकि मन इधर उधर भटकता नहीं है, और जो भी हो, जो भी लोक धर्म हो, उससे हमारा मन परेशान नहीं होता। एक्चुअली सारा संसार की जो क्रियाकलाप है वो एक फन हो जाते हैं, मजाक से लगते हैं। अच्छा बुरा सुख दुख कोई फर्क नहीं महसूस होता। ये ऐसी बात हो जाती है जैसे कोई आम के पेड़ पे चढ़ के हिला रहा है और फल नीचे गिर रहे हैं, और आप उनको देख के कौन सा अच्छा है कौन सा अच्छा नहीं है उसको चुन के उसको खा रहे हैं। आपको कोई मेहनत भी करने की जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि चित्त इतना शांत है। तो जब हम शांति और से साधना शुरू करते हैं तो अपने आप प्रज्ञा जागते हैं। इसको सचमुच में विपश्यना कहते हैं। अगर हमारी बहुत थोड़ी सी इंसाइट होगी तो उसको छोटी विपश्यना कहना पड़ेगा, बीच की होगी तो कहेंगे मॉडरेट कह लेंगे। तो फिर उन्होंने कहा कि मैं ये विपश्यना शब्द इस्तेमाल ठीक नहीं लगता मुझे, प्रज्ञा प्रज्ञा की बात कहें तो ज्यादा उचित लगता है। क्योंकि अगर हम ये सोचे कि हम जब बैठेंगे फिर बैठ के विपश्यना ध्यान करेंगे तो बहुत बड़ी मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि ये निरंतरता की बात है और ये अपने आप होना चाहिए, होती है और अपने आप ही ये मैच्योर होती है अपने रेट के ऊपर। ये अपने हमारे पारमियों पे, हमारे एटीट्यूड पे, हमारी कैपेबिलिटी पे, इस पर निर्भर करता है कि कितना समय लगेगा इसको मैच्योर होने में। हम सिर्फ इतना ही कर सकते हैं कि एफर्ट करते रहें। ये इसी तरह से जैसे एक पेड़ हमें उगाना है, हम सीड डाल दिया उसकी, मान लीजिए आपको मिर्च का पेड़ लगा रहे हैं तो आपने छेद किया जमीन में, उसमें बीज डाला, इसी पौधे डाल दी, पानी डाल दिया, फर्टिलाइजर डाल दिया, रोक इसको चारों तरफ से बाढ़ लगा दी, कोई खा ना ले, कोई इंसेक्ट ना आ जाए। आगे तो जो पेड़ है वो अपनी प्रकृति के अनुसार से ही बढ़ेगा, आप उसको खींच के बड़ा नहीं कर सकते। तो इसी तरह से हमको समझना चाहिए कि हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी इतनी है कि साधना में हम पानी खाद वगैरह डालते हैं ना, बाकी सब अपना प्रकृति के नियमों के अनुसार होगा। कब होगा, इतनी जल्दी क्यों नहीं हो रहा है, इस तरह का विचार करना उचित नहीं है। क्योंकि जैसे पेड़ के लिए आप नहीं कह सकते कि इसको जैसे ही हमने लगाया वैसे ही उसमें से फूल लग जाए और उसमें से मिर्च निकलनी हो जाए, ऐसा होता नहीं। अगर इस तरह की क्रेविंग रखेंगे तो इसी को दुख कहते हैं, और यही द्वितीय आर्य सत्य का दर्शन है कि जो तृष्णा है वो दुख का कारण है। कितना टाइम लग रहा है साधना में, इसकी चिंता नहीं करनी चाहिए। 100 टाइम लग जाए, 1000 लग जाए तो क्या हुआ, साधना करते रहेंगे आराम से, शांति से, चित्त शांत रख के करते रहेंगे तो क्या दिक्कत है। और एक बार अगर हम मुक्ति के स्रोत में पड़ गए, श्रोतापन का अनुभव हुआ, तो फिर तो कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। स्रोत हमें अपने आप ले जाएगा, क्योंकि अब हम निरे लोक में, नीचे के लोकों में नहीं जा सकते। तो ऐसा आदमी अगर श्रोतापन हो जाए तो आप उसको गलत काम करने के लिए फोर्स भी नहीं कर सकते, वो कर ही नहीं सकता। और जब सोच में पड़ जाते हैं तो आपको स्पष्ट हो जाता है कि क्या करना है क्या नहीं करना है, उसके बारे में बिल्कुल कोई डाउट नहीं रहता है। फिर उन्होंने कहा कि मैंने अपने जीवन में धम्म इसी तरह से साधना की है, मैंने चित्त को परिमार्जित किया, शुद्ध किया है। शरीर को देखते हैं तो उसको ठीक से देखा, उसमें केशा लोमा नखा दंता, तो समझने की कोशिश की कि पार्ट को अलग अलग निकालने की, क्या उसमें सुंदरता है कैसा है। तो कहते हैं कि जब भिक्षु लोग गांव में आम्स राउंड पे जाते हैं तो जो उनको ये कहा जाता है कि जैसे वो जा रहे हैं, वो किसी को भी देखें उसको ये समझना चाहिए कि वो एक मृत शरीर है जो चल रहा है। इस संज्ञा पे ध्यान रखना चाहिए ताकि कहीं भी अट्रैक्शन ना हो। कोई सुंदर लड़की भी दिखे तो भी ये समझो कि एक चलती फिरती लाश है, और उसके अंदर जो सामान भरा पड़ा है उसका ख्याल रखो, तो फिर अपने आप कोई अटैचमेंट इन्फैचुएशन नहीं होगा।
और इस तरह की साधना में अपना पूरा दिल लगा के करना है, इस तरह सुपरफिशियली काम करने से नहीं होगा। और इतना ट्रेनिंग करना है कि हम आपके संज्ञा का जो है, इस तरह की संज्ञा आपका सोचने का तरीका ही बन जाए। और ये एक अच्छा फन भी रहता है, कोई इसमें दिक्कत नहीं होती। और ये करने की चीज है, सिर्फ पढ़ने की किताबों से कैसा करना चाहिए उससे वो चीज नहीं है। फिर कहेंगे, फिर अगले उसमें कहें कि आजकल बहुत लोग अलग अलग तरह की साधना सिखाते हैं घोषणा करने की, तो सीधा उस बगैर बेसिक ट्रेनिंग के बैकग्राउंड के कराना शुरू करते हैं। वो मेरे ख्याल से ठीक नहीं है, क्योंकि विपश्यना जो है शील के पुष्ट होने के बगैर नहीं करानी चाहिए। कई लोग कहते हैं कि आपको समता की शांति चित्त शांत करने की जरूरत नहीं है, शील की जरूरत नहीं है, सीधे विपश्यना कर लो। वो संभव नहीं है, वो ठीक नहीं है। या कहने में और करने में अच्छा लगता है कि चलो हमें कोई बंधन नहीं है, जैसा व्यवहार करें सो करें, लेकिन उससे जो है लाभ नहीं होता है। उन्होंने एक भिक्षु का उदाहरण दिया जो वाकई उनके यहाँ रुकना चाहते थे, बहुत कहने के वो बहुत अच्छे थे, साधक थे। तो अजान ने उन्हें बताया हमारे विनय क्या है, तो वो विनय को फॉलो करने में उनको दिक्कत थी, और वो उसको जस्टिफाई करने लगे कि मैं किसी भी कन्वेंशन से अटैच नहीं होता। तो अजान ने उसको समझाया कि मैं तुम्हारी बात तभी मानूंगा जब तुम ये नमक खाओ और तुम कहो कि मुझे ये नमकीन नहीं लग रहा है, और अगर कहोगे नमकीन नहीं लग रहा तो ये पूरा बोरा तुमको दूंगा, खाते रहो। तो कहते जब वैसे कहा तो वो चले गए। तो हमारे को शील का पालन करना बहुत आवश्यक है, और सिर्फ शील के आधार पे ही समझ ध्यान ट्रैंक्विलिटी का शांत चित्त शांत करने का ध्यान होता है। और ऐसा नहीं कि एक बार बैठे और साधना और 2 बार बैठे और मन शांत हो जाएगा, लंबे समय तक साधना करनी पड़ती है, क्योंकि कितने वर्षों तक आप हमने मन को इधर उधर भटकने दिया है, तो ये कैसे हो सकता है कि वो तुरंत आके हमारी बात कहना मान ले और कुछ महीनों में ही सुधर जाए? ऐसा नहीं होता है, लंबा समय चाहिए। कई बार हम ध्यान करने बैठते हैं तो हम कहते हैं हमारा मन बिल्कुल सजग रहे, इधर कोई विचार नहीं आना चाहिए, कोई इमोशन नहीं आना चाहिए। ये सब तृष्णाएं हैं, विभव तृष्णा है, और ऐसा करेंगे तो ध्यान ठीक नहीं होगा। जो नहीं चाहेंगे वही होगा, क्योंकि विभव तृष्णा है, और तृष्णा एक मन को और बेचैन करती जाएगी। जब भी कोई मूड आए, इमोशन आए, कोई परेशानी आए, तो देखें उसको, अनित्य स्वभाव को, उसके दुख स्वभाव को, उसके अनात्म स्वभाव को समझें। और जब इस बार बार रिफ्लेक्शन करेंगे, इस तरह से इन्वेस्टिगेट करेंगे, तो चाहे किस तरह का भी मूड हो, कैसा भी हो, धीरे धीरे प्रज्ञा जागने लगती है। सिर्फ विचार से नहीं होता, बार बार अभ्यास करके जब प्रज्ञा जागती है, भावना में ही प्रज्ञा जागती है, तो फिर हम देखते हैं कि मूड वूड तो आते जाते रहते हैं, इसमें हमको उलझने की कोई जरूरत नहीं। और फिर उनके प्रति एक निर्वेद भाव, एक निविदा का भाव हो जाता है कि ठीक है, ये सब तो चलता ही रहता है, इसमें क्या इसमें सत्य है, इसमें कोई सार नहीं है। तो ये सारे मूड और जो मन की स्थितियां वो अलग रह जाती हैं, और आप सिर्फ जानने वाले के रूप में उपस्थित रहते हैं। तो उदाहरण दिया कि उसी तरह से है जैसे कि जो थाईलैंड में वाटर बेफेलोज यूज होती हैं उसके लिए, प्लगिंग के लिए, कि वो जो है उनको राइस खाना बड़ा अच्छा लगता है, राइस के प्लांट खाना, और उनसे आपको काम कराना है, तो अगर ध्यान नहीं रखोगे तो प्लांट खा जाएंगे। तो इसलिए आपको उनको आप करने देते हो काम, लेकिन ध्यान आंख से उसको देखते रहते हो, इधर उधर कहीं पेड़ों की तरफ ना चली जाए, पौधों की तरफ ना चली जाए, और चाहती है तो फिर जोर से चीखते हो या उसको छोटी से मारते हो। तो बिल्कुल धम्मा प्रैक्टिस भी बिल्कुल ऐसे ही है, अपने मन के ऊपर निरंतर वॉच करनी है कि कहीं इधर उधर ना भटके। ये जो कई बार आप लोग इस चक्कर में आ जाते हैं कि देखने वाला मन कौन सा है और जानने वाला मन और यार ये मूड क्या है, इमोशन क्या है। तो ये समझना चाहिए कि जो जो शुद्ध देखने की प्रकृति है, वो उसको हम चित्त उसको एक समय हमारी नैसर्गिक क्षमता है, और जो मन, वो मन उसको कहेंगे कि
जो उलझ जाता है इमोशंस में, थॉट्स में, फीलिंग्स में। तो फिर बता रहे हैं कि जब से मैं जंगल में गया साधना करने के लिए, मैं इसी तरह से साधना करी मैंने, और इसी तरह से मैं अपने शिष्यों को भी साधना कराता हूँ। मैं चाहता हूँ कि वो देखें उनके अपने मानस की ओर और ठीक से समझें, केवल पुस्तकी ज्ञान में न लगे रहें। और तब जब मुक्ति होती है तो स्पष्ट मालूम पड़ता है, हाँ मन चित्त मुक्त हो गया है। और नहीं होती तो वो भी मालूम पड़ जाता है, समझ में आता है किस तरह से एक कारण से दूसरा कारण जुड़ता है, एक से दूसरा कारण से का इफेक्ट और इफेक्ट से दूसरा कारण बनता है। तो बार बार कह रहे हैं कि उसको पेनिट्रेट करो इनसाइट के साथ, समझो इसको, और तब तक मत छोड़ो एफर्ट को जब तक कि कोई भी इमोशन तुम्हारे ऊपर हावी रहता है। जब तक वो समाप्त ना हो जाए तब तक लगे रहो उसको समझने में। तो मध्यम मार्ग की बात करने की कि हाँ, जो मध्यम मार्ग सबसे सीधा स्ट्रेट बात है कि ना आप अपने आप को ज्यादा परेशान करेंगे, ना इस इंद्रिय सुख में डूबेंगे। तो उसका मध्यम मार्ग की चर्चा उन्होंने की कि जो मोनेस्टिक डिसिप्लिन है वो भी इसी तरह से बनाया गया है। शुरू शुरू में लगता है हमको कि बहुत मुश्किल है, बहुत कठिन है, लेकिन शुरू शुरू में कठिनाई को होना एक आवश्यक है ताकि हम अपने जो विकार हैं, जो तृष्णाएं हैं, विभव तृष्णाएं, उनसे मुक्ति पा सके। जो कठिनाई है वो हम कहते हैं हमें कठिनाई हो रही है, एक्चुअली वो कठिनाइयां हमारे विकारों को हो रही हैं। तो ये अगर ये समझ से काम करेंगे तो दिक्कत कम होती है। शुरू शुरू में सबको कष्ट होता है कि हम चाहते हैं कि आराम से साधना हो जाए, कोई बेचैनी ना हो, लेकिन ऐसा नहीं होता है। ना जब खुशी हो आप उससे उछलने लगे या दुख हो और उससे डिप्रेस हो जाएं, ऐसी बात। दोनों के समता समान देख के समता में रहना। हाँ, शुरू शुरू में तो काफी मुश्किल काम होता है, क्योंकि कभी इस तरफ से हम भूल कर जाते हैं, कभी दूसरी तरफ से, कभी अपने आप को परेशान ज्यादा करते हैं, कभी अपने आप को आराम प्रद हो जाते हैं। तो सीखने की बात है, अभ्यास से हम सीखते हैं। तो जो भाव और जाति की बात है उसको उन्होंने उन शब्दों का इस्तेमाल करके बता रहे हैं कि जो भाव के प्रति, बनने के प्रति अटैच रहते हैं वो मध्यम मार्ग में नहीं चल पाते और एक एक्सट्रीम से दूसरे एक्सट्रीम फ्लक्चुएट करते रहते हैं। और ये सामान्य मानवों का भी यही स्वभाव है। और मध्यम मार्ग जो है एक शांति प्रिय, शांत ऋषियों का मार्ग है, जिन्होंने भाव और जाति दोनों को क्रॉस कर लिया है। सुख दुख उनके लिए कोई मायने नहीं रखते, और दोनों के ट्रांसेंड कर लिए, दोनों के ऊपर उठ गए हैं। तो ये था आज का, काफी लंबा हो गया ट्रांसमिशन। टॉक भी बची हुई है। आज एक्चुअली मैंने पुस्तक जो ढूंढी थी जिसमें ये टॉक थी, तो इसलिए उससे मैं डायरेक्टली ट्रांसलेट कर रहा था, तो शायद इसलिए भी ज्यादा टाइम लगा। तो अब उपेक्षा भावना का अभ्यास करते हैं थोड़ी देर। थोड़ा समय ज्यादा हो जाएगा तो उसको भी उपेक्षा भावना से ही दें। जैसे अभी सुन रहे थे टॉक में भी, उपेक्षा भावना की ओर ही भगवान का ध्यान न जान चाहे। अभी हमारा मिडिल पाथ जो है वही बात कि सुख हो चाहे दुख हो, मन हिले ना,
तो वही उपेक्षा भावना की बात है। शुद्ध जितना चित्त शुद्ध होता चला जाता है, उपेक्षा हमारा स्वभाव हो जाता है। और जब तक वो स्वभाव नेचुरल नहीं बनता तब तक हम अभ्यास के द्वारा उसको कल्टीवेट कर रहे हैं। जिस जिस मात्रा में चित्त शुद्ध है उतनी मात्रा में ये उपेक्षा भावना सहज हो जाती है। तो अभ्यास के लिए कर्म सिद्धांत एक बहुत महत्वपूर्ण संबल है उपेक्षा रखने के लिए, ताकि जो भी परिस्थिति जीवन में आ रही है हम उसको समझ रहे हैं किस कारण से आ रही है और दूसरों को दोष नहीं दे रहे हैं। तो आए उसका काम सिद्धांत को दोहरा लें। मम्मस्य का कम्मदायादा कम्मयोनि कम्मबन्धु कम्मपटिसरणा यं कम्मं करिष्यन्ति कल्याणं वा पापकं वा तस्य दायादा भविष्यन्ति। कम ही हमारी योनि है, हम कम से ही उत्पन्न हुए हैं। तो भगवान कहते हैं कि ये शरीर जो है आपके कर्मों का प्रकटीकरण है। तो इसलिए जो भी चित्त में जो भी परिस्थिति आती है उसमें हमारे अपने संचित कर्मों का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। तो ये लोकीय प्रज्ञा, फिर लोकोत्तर प्रज्ञा कि चित्त हमारा कंपायमान तभी नहीं होता जब आर्य सत्यों का हम निरंतरता से दर्शन करते हैं। जैसे रतन सूत्र में सुनते हैं, यथा इंद्रखीलो पथविंसितोसिया चतुर्भिवाते ही असंपकंपियो तथोपमं सपुरुषं वदामि यो अर्य सच्चान अवेच्च पश्यति। तो जो भी पुरुष आर्य सत्यों को निरंतरता से देखता है उसकी उपमा वो एक खंभे की तरह देते हैं जो कि किसी भी प्रकार की वायु से हिलता नहीं है। तो यही एक सिमली है उपेक्षा भावना की। चित्त कंपायमान नहीं होता, सुख में दुख में प्रशंसा में अपयश में हानि में लाभ में। और यही हमारा बोधि का सर्वोत्तम अंग भी है। यही हमारी साधना का आधार है। सती का अर्थ यही है कि हम सती का अर्थ भी यही है कि हम जो भी हो रहा है उसको उपेक्षा भावना से देखें, बगैर बेचैन हुए, बगैर उसमें राग जगाए, बगैर द्वेष जगाए। तुम्हारी सारी साधना में उपेक्षा भावना का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। तो इसलिए बोधि का अंग ब्रह्म विहार पारमी, तो ब्रह्म विहार में हम अपने लिए और सभी के लिए कामना करते हैं कि वो प्रकृति के नियमों को समझें, कर्म सिद्धांत को समझें, आर्य सत्यों को समझें, दुख के कारण को ठीक से समझें, ताकि चित्त कंपायमान ना हो, हमारा चित्त भी कंपायमान ना हो और बाकियों का भी, हमारे जानने वालों का, प्रियजनों का, मित्रों का और समस्त प्राणियों का, ताकि शांति से सब लोग जी सकें, संसार में सुख शांति हो। तो थोड़ी देर ये भाव अपने मन में आते हैं, शरीर में उसका असर देखते हैं और फिर दसों दिशाओं में इसको फैला के
समय जो जीवन की परिस्थिति है उसमें अगर कोई मन हिल रहा है, कंपायमान हो रहा है, तो उपेक्षा भावना का अभ्यास कर सकते हैं उसके प्रति। उपेक्षा सगतेन चेतसा एकं विसंपरित्वा विहरति तथा द्वितीयं तथा तृतीयं तथा चतुर्थम् इति ऊर्ध्वम् अधोतिर्यं सम्पदि सम्पत्तथाय सम्भावन्तं लोकम् उपेक्षा सहगतेन चेतसा विपुलेन महङ्गतेन अपमानेन अवेरेन अव्यापज्येन परित्वा विहरति। तो इंस्ट्रक्शंस हैं भगवान की कि हम विपुल महान असीम उपेक्षा भावना से चित्त को व्याप्त करके दसों दिशाओं को इस उपेक्षा भावना से व्याप्त करते हैं, बगैर किसी भेदभाव के, बगैर किसी द्वेष के, बगैर किसी वैर के। सभी दिशाओं में, सभी प्राणियों के प्रति, सभी लोकों में और अपने प्रति भी उपेक्षा भावना, ये शुभकामना के हम सब की दृष्टि सम्यक हो, प्रज्ञा जागे, अनित्य बोध जागे, अनात्म बोध जागे, दुख बोध जागे, ताकि कोई भी परिस्थिति हमें कंपायमान न कर सके। हर परिस्थिति में चित्त समता में रहेगा तो हम उचित रिस्पॉन्स कर पाएंगे, रिएक्टिविटी नहीं होगी। सती और प्रज्ञा के आधार पर रिस्पॉन्ड करेंगे। इसी में हमारा भला, सबका भला, समस्त विश्व का भला। ये विपुल महान असीम उपेक्षा भावना अपने से शुरू करके चाहे तो उस तरह से सर्कुलर डायरेक्शन में भी कर सकते हैं, अपने से, फिर अपने पड़ोसियों से, अपनी सोसाइटी से, अपने कॉलोनी से, अपने शहर से, अपने देश, और इसको फैलाते फैलाते सारा विश्व, और फिर महागत चित्त से सारा ब्रह्मांड, सभी के प्रति उपेक्षा भाव। सबे सत्ता सुखी होन्तु, सबे होन्तु चखेमिनो, सबे भद्राणि पश्यन्तु मा किञ्चित् पापमागमात् मा किञ्चित् शोकमागमात् मा किञ्चित् दुःखमागमात्। भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वबुद्धानुभावेन
सदा शुद्धि भवन्तु ते भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वधर्मानुभावेन सदा शुद्धि भवन्तु ते भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वसङ्गानुभावेन सदा शुद्धि भवन्तु ते। Arhan Samma Sambuddho Bhagava Buddhang Bhagavantang Abhivadimi Bhagavata Dhammo Dhammang Namassami Supatipanno Bhagavato Savaka Sangho Sangham Namami